Hello, hello, hello everyone. Hello, hello, hello. So let's wait for 5 minutes and then we'll start our streaming work. So let's start with today's part. और आज हम करेंगे अ प्रोजेक्ट ऑन डेटा एनालिसिस जहाँ हम जो क्रिकेट टीम होती है उसके डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे एंड विल लुक इनटू ईयर्स ऑफ डेटा कि हाउ पीपल आर परफॉर्मिंग एंड what are the good parts and what are the parts which have taken good way in the upcoming years और ये कैसे जो डेटा है वो एनालाइज कर सकते हैं. हम डेटा को पहले क्लीन कर रहे होंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टू पार्ट्स वेयर हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे एंड देन विल लुक ऑन इट वेरी सीरियसली. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टूडेज वीडियो. So first we'll rename our file and we'll import pandas, import numpy, then matplot and then Seaborn and also plot express. ठीक है. I'm not going into basics of these things because I believe these things are already told to you and if you are going for a project you should always be knowing the basics first. ठीक है. So let's first import
first let's connect it. ठीक है, you should connect it to the backends. Now it's connected. So हम import करते हैं pandas as pd, then we'll import numpy as np, we'll import matplotlib, ठीक है, then we'll import Seaborn as sns, we'll import Plotly as express as px, ठीक है. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज जिनका हम यूज़ कर रहे होंगे आज के प्रोजेक्ट में. आफ्टर दैट हम काम करेंगे अपने डेटा को लोड करने का. तो हम अपने डेटा फ्रेम को नेम दे देते हैं df इज इक्वल टू pd.read, और हमारी जो फाइल होने वाली वो csv है. सो विल पुट इट इन. और अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आइदर वी कैन import the file directly into this Google Colab, or we link our Gmail, ठीक है, we link our Google Drive, and then we can have our file here. But what I'll do is I'll go and I'll upload these directly, ठीक है. So I'll copy the path, and after that what I can do is I can just put in and paste the link, और हम फिर इसको रन कर लेते हैं. And let's see. So we can see the code has run successfully. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हम पहले अपने डेटा फ्रेम को देख लेते हैं, ठीक है. इफ यू क्लिक शिफ्ट एंड एंटर, so this thing will just run automatically. So we have team names, winners, margin, ground, match date, year, then we have scorecard, tests, format, and much more. ठीक है. Overall we have 9 columns and 7,000 approximate rows. So what we'll do is we'll move to the next part where I want to know the info, ठीक है, df.info of the data. And let's see. So we have everything in object form. So it's gonna be an easy one. So first what we'll do कि हम कर लेंगे अपनी stripping. So what we'll do is we'll put this in hashtag strip white space from column names. And to do this, what we'll do is df of columns equal to df dot columns dot str dot strip, and we'll just run it. Now this stripping is done. Next what we'll do is convert the match date to date time, ठीक है, because this is very important. If you see the dates now, they are not in proper format, and also we need a similar and precise format where we can compare our dates. So I'll try to convert it. So I'll just, if match date, I think it should go on like
मैच डेट, ठीक है, इन df डॉट columns, so df and we'll put it as match date is equal to pd dot to, so we are creating a new thing, df, and then we'll put this as again match date. Okay, so here it's gone wrong, और हम इसको ऐसे select कर लेंगे, and also if some error occurs, हम उसको भी fix करने के लिए we'll put error is equal to cause, and we'll run this. So you can see that it says could not info format, so each element will be personalized individually, ठीक है, fallback to date until, and this is done. Next what we will do is convert year to integers, ठीक है. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, we are just working through data cleaning part, ठीक है. We'll clean the data set and then we'll move on to data visualization. So the third part would be convert year to integer, ठीक है. And also हम check करेंगे, check if year column exists or any column contains year, ठीक है. This is very much important because अगर column ही verified नहीं है तो it will be an issue for us, ठीक है, आगे codes में. So for this we'll do is if year not in data frame dot columns, year call is equal to next, then we'll give it again one bracket and then we'll put call for call in df dot columns if year in call. So this is overall n typing is, ठीक है, codes are typed so we can have a clear overview कि हमारा जो year column है वो verify भी हो जाए और जो values है वो return भी करे. So हम इसको क्या करेंगे, we'll just put none for if that value is not here, and then we'll move on to second line. If we'll put our second condition that if year तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि we'll just rename the column, ठीक है. हम year को क्या करते हैं, rename कर देते हैं. This will help us identify, ठीक है, date of rename, and then we'll just columns is equal to
put this one year call slash we are giving this name as year only. And then we'll move it like in place is equal to true. Run this code and so you can see कि इसमें हमने क्या किया है कि जो ईयर हमारी जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में था उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करा है एंड देन वी हैव रीनेम्ड द ईयर कॉलम. ठीक है, जो ईयर कॉलम हमने बनाया था उसको हमने ईयर कॉलम में रिप्लेस कर दिया. ठीक है, दैट मीन्स वी हैव मेड एन अनदर कॉलम. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं ना हम उनको हैंडल कर लेते हैं. तो उसके लिए हम will put like handling missing values in margin, and after that if we can say we'll put like margin in data frame not columns. Okay, so यहाँ पे we have to put like this columns and then we'll put this. So df margin equal to df dot, again we'll get the same thing. If I get margin then we'll fill it out using fillna command. तो अगर हम पे कोई ब्लैंक वैल्यू आती है तो उसको हम अननोन कर देंगे. ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइन. सो ओके, सो वी आर गेटिंग एन इनवैलिड सिंटेक्स एरर क्योंकि हमने यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज वी शुड रिमूव दिस एंड ऑल्सो डॉट fillna इज अननोन. Let's run it again. Okay, we have got this error. Okay, now it is fixed. एक बार हम अपने डेटा फ्रेम को फिर से चेक कर लेते हैं कि हैज द चेंजेस केम और नॉट. तो आप देख सकते हो कि जो हमने मैच डेट था उसको चेंज करा था डेट टाइम फॉर्मेट में. सो इट हैज़ बीन चेंज्ड. और जो मिसिंग वैल्यूज है अगर उसको हमें चेक करना है तो हम डेटा फ्रेम को रन करके देख लेते हैं. सो टॉप 5 या टॉप बॉटम 5 में तो कुछ नहीं दिख रहा. व्हाट विल डू इज हम डेटा फ्रेम के हेड्स को चेक कर लेते हैं 10 वैल्यूज. ठीक है, एंड देखिए वी कैन सी दैट सी अननोन वैल्यूज आर इंसर्टेड. सो द कोड हैज बीन रनिंग सक्सेसफुली टिल नाउ and we'll go to next part of our code जहाँ पे हम कर रहे होंगे जो हमारी कंसिस्टेंटी कॉलम है उसको रीनेम करेंगे हम. ठीक है, तो अपनी डायरेक्टरी को रीनेम कर रहे होंगे. सो विल जस्ट पुट अ कमेंट नाउ. सी पुटिंग कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमने ये काम क्यों किया था. ठीक है, सो आई एम कंटिन्यूसली पेस्टिंग आउट द कमेंट्स. सो रीनेम dict, that means directory or dictionary. ठीक है, we are just making a new dictionary here and I'll put it down like scorecard test and we'll give it. So this is our key. ठीक है, जो वैल्यू साइड है वो हम की करते हैं, उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं and then we will have it anywhere in the code जहाँ भी हमें required हो. So we'll put it like this test and then we'll put no. ठीक है, and अब हम क्या करते हैं अगर और इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और भी चीज़ें अगर आप ऐड करनी है तो आप यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो बट दैट नॉट नेसेसरी फॉर मी राइट नाउ. सो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा. एंड okay
I'll do like df dot column. Okay, I'll rename it. So df dot rename, and then we'll put it like columns is equal to rename dict, and then in place we'll put it true ताकि we get a proper response to it. So हमने जो अपनी कॉलम्स हैं उनको रीनेम कर दिया था, एक कंसिस्टेंटली बिल्ड हो जाए. ठीक है, हमारे जो डेटा टाइप है वो तो सेम है ही अप्रॉक्सीमेटली. एंड देन हम क्या करते हैं, अपने एक क्लीन डेटा सेट समरी देख लेते हैं. तो डिस्प्ले ऑफ क्लीन डेटा समरी, जो भी हमने अब तक काम किया, तो विल गिव इट अ प्रिंट कमांड and we'll put like clean data summary, and then print df dot info. Again we are getting the info part, and then we'll again print हेड्स. ठीक है, तो हमें हेड्स फिर से प्रिंट करा लेंगे. लेट्स सी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी आस्क फॉर. ठीक है, जो ओवरऑल हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो है. एंड देन वी हैव हेड्स हियर. ठीक है, एंड यू कैन सी ये जो पार्ट है वो एक ही लाइक दे आर 9 कॉलम्स, सो इट हैज बीन शोन लाइक इट एज दे आर स्पेस लैग. एंड ऑल्सो you can see जो कि हमने ऑलरेडी चेक करा था, that our data types is good one. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो डेटा क्लीनिंग पार्ट है वो कंप्लीट होता है. एंड आई थिंक दिस आर द गुड थिंग्स दैट Python provides us कि हम using a few codes only we can do all our cleaning process, and it saves our time. बिकॉज अगर हम जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर हम एक्सेल का यूज़ करते हैं तो इट टेक्स मल्टीपल चेक्स एंड ऑल्सो फॉर्मेटिंग इज लिटिल हार्ड ऑन एक्सेल. बट इफ यू आर यूजिंग पाइथन एंड इट डज ऑल द कमांड्स एट वन गो, एंड इट मेक्स ओवरऑल प्रोसेस ईजियर. ठीक है, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ I'll put this as a comment. ठीक है, now we'll be starting with data visualization part. ठीक है, so let's take 2 minutes break and then we'll continue this part.
So with this, let's start with our data visualization part. And यहाँ पे हम फर्स्टली फाइंड कर रहे होंगे मैचेस प्लेड पर ईयर, एंड टू डू दैट वी हैव टू डू इन डेटा विजुअलाइजेशन हम बहुत सी चीज़ें कर रहे होंगे. सो फर्स्ट विल डू इज शॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, देन विल गेट द टॉप 10 ईयर्स विथ हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर शीट. और उसके बाद हम बॉटम 10 ईयर्स की फाइंड कर रहे होंगे, एंड आफ्टर दैट विल डू दी प्लॉटिंग साइड बाय साइड, ठीक है. So as you can see, this Google Colab has its AI features, and if you write some proper comments, so it will give you suggestions based on the command you have typed, ठीक है. So you can use that and build your own codes, ठीक है, which are well verified, and AI doesn't make mistakes most of the time. So I'll just press on tab, and the code will be typed. Then I'll get top 10 years with highest matches, and we can go with highest years is equal to matches per year, ठीक है. So we have, if you see, match data and scores are there, so we can use them and do our thing. So we'll first sort them, ठीक है, sort with values ascending, is equal to false and head equal to 10. हम 10 की वैल्यू में ले रहे हैं, ठीक है, टॉप 10, एंड देन विल गेट बॉटम 10 years with lowest matches, and excluding, हम इसमें exclude भी कर देते हैं, ठीक है, we'll just put extra filters on values, and also 0, ठीक है, we'll put it like, and 0 matches if in. तो इससे हमारा क्या होगा कि जो ओवरऑल डेटा है ना वो क्लैरिफाई होके हमारा सिर्फ लोएस्ट ईयर्स का ही डेटा आप आ सकेगा, एंड विल हैव एन प्रिसाइज नंबर कि हम कितना काम कर रहे हैं, हाउ इट्स गोइंग. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद विल स्टार्ट प्लॉटिंग देम, ठीक है. यहाँ पे वी आर गेटिंग सम okay, I have written this in, that's why it was now let's get it plotted now. So to do plotting, we'll start plotting side by side. We'll plot both of them side by side, so we can get a proper reference and we can have a clear comparison of both of them, ठीक है. So first we'll do is fix axis, figure axis. Now we'll give the axis area is equal to plt dot subplots, and we'll change the thing to 18/6, ठीक है, and we'll give, now we'll leave SNS bar plot, and here the axis I'll use is 1. So you can see कि जो कोड से प्रोवाइड करता है उसमें अगर हम मिनिमम चेंजेस भी करते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, तो वी कैन गेट टू अ प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है. सो दिस कोड्स आर वेरी यूजफुल एंड यू शुड लर्न टू यूज देम एज रिक्वायर्ड. अब इसने इतना दिया है, आई वॉन्ट
to customize the font size also. So I'll put it like font is equal to, I want 14 as font size, and then we'll put number of, we'll put in this the number of matches. X label should be number of matches. We have to, and I want to put this on y is year. ठीक है, y पे हम y year ले लेते हैं, and x पे will put number of matches. Same goes for second figure, which is for bottom 10, and we'll put one thing we can do is हम यार palette भी use कर लेते हैं ताकि we get an proper figure and color sequence. So what I'll do is I'll just put back it to 0, ठीक है, and then palette I'll give it to greens are for a specific coloring, and then this should be same, and again either मैं इसको I'll put 1 as here, and then palette is equal to, I'll put reds, ठीक है, for proper referencing. And after that everything is same, ठीक है, none of much changes, but again this x label should be number of matches, that perfect, and then x is should be 1 dot set y label should be here, and yeah, now it's done. If I run this, you can see that the graphs are here, but we got an error in the second line, 15th. Okay, so here we have an error. So what I'll do is x is 0 set title. Okay, so you should know that we have an option to fix the errors also, ठीक है. अगर आप किसी भी error पे fix करना चाहते हो, just click and you'll get the option to view problem, and then you can get it fixed by AI. But here since I'm doing it, okay, I'll sorry, so हमने font size लिखना था पूरा, that's why it was showing error, I guess, and also now everything is fine. Let's run it again and see. So now you can see that still some typo errors is showing, which we can fix it, ठीक है. So I'll just put it to font size again here, and you can see that code is successfully running and everything is on proper, ठीक है. So we have the top 10 years with highest matches, and then we have top years with lowest matches, and also you can see the number of matches according to dates, ठीक है. So years have been listed on we can say y label, and the number of matches has been labeled on x, ठीक है. So this was the first visualization part where we made the top 10 year with highest matches and bottom 10 years with highest matches, and this brings us to the next plotting form, जहाँ पे हम कर रहे हैं top 10 teams by total matches played, ठीक है. And here we'll see, as according to our data, हम पे जो है team 1 and team 2 is the column name. So what we'll do is we'll take it like that, team 1 counts is equal to data frame dot
then we'll put the value as counts. ठीक है, then we'll okay df, okay we don't need to put this thing. Then we have team2 counts is equal to df, and I think we'll move on to team2. ठीक है, we have to put the exact name which is listed in the dataset, so we can avoid errors, because this thing sucks. And then I don't want to find this. I want to get a combined team count, so I will write combined team counts is equal to team1 counts dot add. Then we will put it like team2 counts fill with 0 and short value. Now we'll put it like value is equal to 0. Then we'll put dot sort values ascending false. Again we'll put the same view angle and we'll not mismatch our data findings. And I'll also like to put head. ठीक है, so I'll put head is equal to 10 because I need to get in, and then I'll delete this line. I'll put it as plot figure. And figure size should be, I'll just getting this same codes which I want, so I'll change the only sizing 12:6. ठीक है, that's fine. And team played, and I'll give the font size to be precise 16, and plt dot x label I'll put team. Then we have an I don't want rotation. So on X we are putting matches played. I don't want this to be on team. I want matches played. And on Y I want teams. Okay. And we'll get the layout code, which is plt.write.layout, and then we'll show it. And if you see, it has been in such a wonderful chart in front of us, and this clearly shows the top 10 teams by total matches played. Okay. So first we have England, then we have Australia, India, Pakistan, and it continues to Bangladesh. ठीक है, so this is all overall listings कि हम ये कैसे perform कर सकते हैं. Tomorrow again we'll continue our this part. We'll continue this coding part, and we'll complete the data visualization for this thing. If you have any doubts, please look back to this video and also comment down in the video so I can reply you at instant. ठीक है. See you in the next video tomorrow again, and thank you so much for joining. Have a nice day. Good night.